So we will start today unit number 5th, that means matrices. Matrix is the well-known topic for all of you, as you have already studied this topic in 10th or 11th or 12th. But in this unit for M1, some new topics are added, like consistency proof, rank of the matrix, and Cayley-Hamilton theorems, Cayley-Hamilton theorem, and simultaneous equations. So these are the topic for this unit. In this chapter, in this unit, we have the following topic. Like first one is rank of the matrix. Second one is consistency. Next, eigenvalue, eigenvector, and then Cayley-Hamilton theorem. So we have 4 topics for this unit, matrix. We start with the basics of matrix and basic properties for this. And I think you all know about the basics of matrix, like adjoint, inverse, and minors. Now this is the form of the matrix. Matrix is a rectangular array. Matrix is a combination of row and columns. The basic type of matrix, these are the different type of matrix: rectangular matrix, column matrix. The matrix contain only single column, a single row. Then the matrix is a row matrix. A square matrix, in which number of rows and number of columns are equal. And a square matrix define the order of the matrix. That means n by n. For example, 2 by 2, 4, 3, 6. The order of this matrix is 2. And the dimension is 2 by 2. The dimension of the matrix is defined by R cross C. That means row by column. The dimension of the matrix is a row by column. This is very important when we multiplied 2 matrix, row by column. Diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix or identity matrix, in which the diagonal element having only unit element, that means 1. Now, upper triangular matrix and lower triangular matrix. Upper triangular matrix, the upper triangular matrix having upper elements of the principal diagonal. Upper triangular matrix having कौन से कैमरा पे क्या भाई दवा के रख वीडियो बन जाएगी कहाँ दवा के रखूं भैया mute yourself Shakir. Upper triangular matrix, a matrix having only upper values of the principal diagonal. This is the principal diagonal. That means 1, 0, 5. This is known as a principal diagonal. If all the elements of the lower elements of the principal diagonal are 0, then this is
upper triangular, and if all the upper values of the principal diagonal is, this is known as a lower triangular matrix. This is very important, lower and upper triangular, because the concept of lower and upper triangular matrix used in the rank of the matrix or echelon form. Lower triangular matrix, transpose matrix, symmetric. Okay. One more thing, determinant of the matrix. If the determinant of the matrix is 0, then this is known as a singular, otherwise a non-singular matrix. You have to know about the definition of singular and non-singular matrix. If the question is contain this language, A is the singular matrix. Okay, so we have a determinant A is equal to 0. Minor. This is very important. Minor means consider a square matrix A of order n. For example, this matrix. This is the square matrix. Then minor of minor of this, that means, for example, minor of any element Aij is the determinant of order by deleting the elements of the matrix A. Fifth, 1, 2, 3. For example, here is A, I, sorry, remove this. For example, we have a 3 by 3 matrix. A11, A12, A13 up to A33. Then the first minor, that means minor of A11. So minor of A11 is this. A22, A23, A32, A33. That means after deleting the row and column which containing A11 element, then the remaining part is called minor of A11. A11 को जो रो या कॉलम कंटेन कर रही है, उस पूरी रो कॉलम को अगर आप डिलीट कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस इज नोन एज द माइनर. और वो किसका माइनर होगा? A11 का माइनर होगा. ठीक है, ये होता है माइनर. These are the basic concept of the matrix, and you have to know about it before starting the matrix chapter. These are the minors. M11, that means minor. This is the minor of 2. 3, 2, 4, 6. M12. M12 means 5. So the minor is A1026. M13, that means 8. The minor of 8 is 1034. And so on. M21. 12. Sorry. M21, M22, this is 2. 22 and M23. Same as M31, M32 and M33. So we have 9 minors for 3 by 3 matrix. The number of minor is same as the number of elements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 minors for this matrix. If we have 2 by 2 matrix, then we have then we can find 4 minors. Cofactor. Cofactor of the matrix.
Now we start from the first topic, rank of a matrix. Rank of a matrix. We can find the rank of the matrix for any of the matrix. Okay, that means rank doesn't restricted in, hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now, the first topic is rank of the matrix. Rank of the matrix. We solve a rank of the matrix by normal form and echelon form. We have two methods for solving the rank. We have two methods. Yes, Vivek, you have any doubt? तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म. अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में आपको जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, जो गिवन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को आपको जीरो फॉर्म करना है, जीरो बनाना है. ठीक है, जितने पॉसिबल हो रहे हैं. ऐसा नहीं कोई नहीं नॉन जीरो भी हो रहा है तब भी आप उसको जीरो बना रहे हैं. आपको उसको जीरो बनाना है. ठीक है, बट जो डायगोनल एलिमेंट है उसको हम कोशिश करेंगे कि वो 1 रहे, 1 या कोई भी टर्म. ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, बट डायगोनल एलिमेंट अगर नहीं जीरो हो रहे हैं तो चलेगा, बट बाकी सारे एलिमेंट को हमें जीरो बनाते जाना है. वो होता है आपका नॉर्मल फॉर्म. तो जितने हमारे पास 1 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट में जितने हमारे पास 1 आएंगे, तो नंबर ऑफ 1 इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ऐसे डिफाइन होता है बेटा रैंक के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, डिटरमाइन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ ए इज इक्वल टू दिस. द रैंक, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4. क्या है इसकी ऑर्डर? 3/4 है. अब 3/4 है तो इस 3/4 के लिए हमें से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें ये इन एलिमेंट्स को जीरो बनाना है. ये ठीक है ना, ये इन एलिमेंट्स को हम क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे. जितने आपके पॉसिबल जीरो बन रहे हैं ना, आपको उतने जीरो बनाना है. बट उसमें भी आपको डोंट फोकस ऑन दी डायगोनल एलिमेंट. डायगोनल एलिमेंट को चेंज करने या उसको जीरो बनाने के लिए आप बिल्कुल फोकस मत कीजिए. आप किन एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे? किन एलिमेंट्स को आपको जीरो बनाना है? जो डायगोनल में नहीं है, दैट मीन्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, यहां पर हमारा यूज होता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर. तो हम उन टर्म्स को जीरो बनाते हैं और किसके थ्रू जीरो बनाते हैं? एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ये आपका गिवन मैट्रिक्स है. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट, R1 is interchanged by R3. R1 is interchanged by R3. So last row 1 1 1 2 and 2 1 minus 3 6. Both are interchanged. This is minus. Now it is sufficient for today and we will continue this question next day.